Hello friends, hope you are doing good. I welcome you all to Vamsi's Golden Series for IAS. I am telling you again that IAS is very easy exam. But if you just believe that IAS is easy, it is not going to be easy. You need to understand why this exam is easy. आईएएस आसान है ऐसा सोचते रहेंगे तो ऐसा ही रहेगा, वे कभी आसान नहीं बनेगा। हमको समझना है वे आसान क्यों है। जिस दिन आपको समझ में आएगा उस दिन आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। In this video, we will discuss the module Modern India. You all know that I have divided the entire syllabus of General Studies into 10 modules. Modern India is one of them. आप सब जानते हैं ना, मैं पूरा सिलेबस को 10 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया हूं, उसमें मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत एक मॉड्यूल है, तो हम इस मॉड्यूल की बात कर रहा हूं। ये मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स की बात करेंगे तो 8 क्वेश्चंस 6 to 8 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज इस मॉड्यूल से आता है। इट्स ए गुड नंबर एंड इफ यू सी दिस इज वेरी इजी मॉड्यूल। हार्डली आई टेक 10 hours टू कंप्लीट दिस मॉड्यूल। सिर्फ 10 घंटे आप लेक्चर सुनेंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल क्वेश्चंस दैट कम इन द एग्जाम। वेरी इजी। To make this module even easier, I am further dividing this into 6 parts. First part, एंट्री ऑफ यूरोपियंस। भारत में यूरोपियन का आगमन, एंट्री ऑफ यूरोपियंस इनटू इंडिया, वे कैसा आया वगैरह यहां डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश की बात करेंगे। आउट ऑफ ऑल द यूरोपियन कंट्रीज ब्रिटिश ज्यादा पावरफुल कैसा बना, हाउ दे हैव एस्टेब्लिश्ड देमसेल्व्स इनटू इंडिया, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, various laws passed by them and concerned governor generals। कौन सी लॉ, सपोज एबॉलिशन ऑफ सती, कौन है गवर्नर जनरल उस टाइम पे जब वे पास हुआ, ये सारे चीजें हम बात करेंगे। देन रिफॉर्म्स ऑफ 19th सेंचुरी, राजा राम मोहन राय वगैरह लोग वे ने किस तरह की रिफॉर्म्स लेना चाहता था, लेके आना चाहता था एंड वगैरह हम बात करेंगे यहां। देन 1857 रिवोल्ट, वे रिवोल्ट हुआ क्यों, कैसे हुआ और उसके कंसिक्वेंसेस क्या है वगैरह चीज हम बात करेंगे। एंड फाइनली इंडियन नेशनल मूवमेंट। सो 6 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर रहा हूं, ये मेरा पर्सनल है, अगर आपको 6 पार्ट्स नहीं है तो आप 8 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज आपको फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट छोटा छोटा लगेगा तो वे दोनों को मैच करके एक ही पार्ट बना दीजिए। अगर लास्ट पार्ट आपको बड़ा लगेगा तो उसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ये कंप्लीटली पर्सनल है, अदरवाइज मैं तो 6 पार्ट्स में बता रहा हूं आपको। So if you take UPSC, most important part out of all these is only 6th part। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस 90% ऑफ क्वेश्चंस 6th पार्ट से आता है। सो ज्यादा क्वेश्चंस इसी से आता है, कभी कभी 1 क्वेश्चन इससे आता है एंड ये सारे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 5th पार्ट सब मिला के मे भी एक क्वेश्चन आएगा। सो स्टिल डोंट वरी, डोंट जस्ट गो फॉर ओनली इंपॉर्टेंट, लेट्स लर्न ईच एंड एवरीथिंग। अगर सारे 10 घंटा में कर सकता है सो 10 घंटा लगा ही लेते, सारे सीख ही लेते, क्या फर्क पड़ेगा। ओके, कैन आई स्टार्ट? नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द एंट्री ऑफ यूरोपियंस। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट एग्जाम्स एंड occasionally questions come in UPSC also. It just take around 1 hour 15 minutes. So let's start this topic. Okay, इसमें से हम क्या बात करने वाला है एंट्री ऑफ यूरोपियंस में। पहले मैं आपको बताऊंगा पोर्चुगीज कैसे आया। सबसे पहले आया भी पोर्चुगीज, तो पोर्चुगीज की एंट्री की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे डच, देन द ब्रिटिश, देन द डैनिश पीपल एंड फाइनली द फ्रेंच पीपल। सी स्वीडिश और स्पेनिश पीपल भी थे बट वे इंडिया में कुछ किया नहीं, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट देम। वी ओनली डिस्कस अबाउट द पोर्चुगीज, द डच, द ब्रिटिश, द डैनिश एंड द फ्रेंच। ओके, कैन आई स्टार्ट द टॉपिक? Even before starting the topic, I would like to tell you which people are these। का मतलब we say Portuguese, लेकिन पोर्चुगीज कौन लोग है, कहां से आया, वे मैं आपको समझाना चाहता हूं। This is Europe map. If you see this map, there is a country here, Portugal. वे पोर्चुगल के वासियों को हम बोलेंगे पोर्चुगीज।
अगर हिंदी की बात करेंगे यू कैन राइट पोर्चुगीज ऑल्सो और पोर्तुगलीज लिख सकते हैं, आपका मर्जी है। तो पोर्चुगीज और पोर्तुगलीज फ्रॉम पोर्चुगल। सिमिलरली इफ यू सी द मैप, हियर इज द कंट्री नेदरलैंड्स। जो नेदरलैंड का जो लोग है उनको बोलेंगे हम द डच पीपल। सो द डच पीपल आर फ्रॉम नेदरलैंड। Similarly, here is United Kingdom. These people are British people. You all know this. So British from UK. Then here is Denmark, and here is Norway. पहले Denmark and Norway have same union. So Denmark and Norway people are called the Danish people. So the Danish are from Denmark and Norway. And here is France, and these people are called French people. Or in Hindi you can say French also, or Francis. So French or Francis people from France. Okay, so we are going to discuss about these people. First we will start with the Portuguese. What all you need to know for exam point of view from this is the first point, Columbus. You all know who is Columbus. Columbus has discovered America, that too in the year 1492. So just remember these facts. ये बहुत आसानी सिंपल फैक्ट है, बहुत लोग जानते हैं। यूपीएससी में तो कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन छोटी मोटी कभी एसएससी एग्जाम में पूछेगा तो फॉर सेफ साइड माइंड में रख लेना। सो 1492 कोलंबस एंड अमेरिका, दीज आर 3 कीवर्ड्स यू हैव टू नो। इवन इफ यू वांट टू नो मोर, स्पेन नेविगेटर। So the statement here to know is, in 1492 Spain navigator Columbus set out to reach India, but instead he discovered America. 1492 Spain navigator Columbus, America. Clear? Don't make any running notes, you do not require, because you will get handout and even mind sheet, a new concept. Next point to note is Vasco da Gama. Portuguese explorer Vasco da Gama discovered a new and all sea route from Europe to India in 1498. यहां भी 3 कीवर्ड्स आपको नोट करना है। कौन सी? वन इज वास्को ड गामा, सेकंड इज द ईयर 1498, थर्ड इज ऑल सी रूट। सी ही इज नॉट द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया। इंडिया ग्रीक्स के साथ बहुत एंशिएंट टाइम से ट्रेड करते थे, बट ही इज द वन टू कम टू इंडिया थ्रू ऑल सी रूट। पहले लोग आते थे लैंड रूट से या पार्शियली बाय लैंड रूट एंड सी रूट, बट he the one to reach India completely by sea route. So Vasco da Gama, all sea route, 1498. There is a place here, if you know, if you see here, this is called Cape of Good Hope, because many people used to successfully reach this place, but after that they failed to reach India. So that's why इसका नाम रखा केप ऑफ गुड होप। चलो यहां से अच्छी होप से चले। सो केप ऑफ गुड होप के थ्रू सेल किया एंड देन ही रीच्ड कैलिकट। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज कैलिकट। सो विच प्लेस इन इंडिया ही फर्स्ट रीच? कैलिकट। देन ही परsuaded द किंग ऑफ कैलिकट, जमोरिन। सो दैट टाइम द किंग ऑफ कैलिकट वाज जमोरिन। वे उनके मिला और उनको परsuade करा और परमिशन लिया ट्रेड करने के लिए। सो द नेम, ये यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, लेकिन मे भी छोटी मोटी एग्जाम में पूछेगा तो इसलिए माइंड में रख लेना। सो जमोरिन इज द किंग। सो द कार्गो दैट ही कैरीड गेव हिम 60 times profit, 60 times the cost of his voyage as profit. So you can understand how much profitable the trade was. जितना खर्च उसको लगा आने जाने में, उससे 60 गुना वे कमाया। सो दैट्स व्हाई मेनी पीपल वांटेड टू कम, बिकॉज इट्स द फॉर्च्यून इफ दे कैन रीच। दैट्स व्हाई many people tried to reach India, but many people could not reach. He was the first person to reach. Clear? So what all you have learned till now? Columbus, America, 1492. 1498 Vasco da Gama, India, Calicut, all sea route, Jamorin, 60 times profit. Clear? Now you need to remember one more person. The name of this person is Cabral, Pedro Alvares Cabral. Who is he? कौन है वे? ही एक फ्लीट भेजा था 1500 में पोर्चुगीज ने, क्योंकि वे देख चुका है इंडिया से कितना प्रॉफिट आ रहा है।
So in 1500, a fleet was sailing for India, and he was the commander-in-chief of that fleet. So Cabral. So Pedro Alvares Cabral was appointed as commander-in-chief of a fleet sailing for India in 1500. तो हम क्यों याद रख रहे हैं इनका नाम? तो क्या हुआ when he had to go to India. Instead of reaching India, first they reached present-day Brazil. That's why from 1500 till 1822, Brazil was a colony under Portuguese Empire. So कौन सी बंदा था? Cabral. Cabral 1500 instead of reaching India, reached Brazil. That's it. Now let us remember some early factories that were made by the Portuguese in India. वे यूपीएससी में भी पूछ सकता है. सो इन इंडिया दे एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट कोचिन. ये याद रखना, अगर पूछेगा पोर्चुगीज ने अपना फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश किया, तो एक कोचिन में है. सो फर्स्ट फैक्ट्री एट कोचिन. इवन फॉर सेफ साइड एक दो और अर्ली फैक्ट्रीज को भी हम माइंड में रखेंगे. अदर अर्ली फैक्ट्रीज इंक्लूड फिलान, प्रेजेंट डे कोल्लम इन केरला, Kannur, you can see the places in map also, and Kannur, present day Kannur. So the first factory was at Cochin, and other important factories, early factories are Kollam and Kannur. So mostly their base was in Kerala in the beginning days. Getting me? Now we remember another important person. The name of this person is Francisco de Almeida. Francisco de Almeida. कौन है ये? He was the first Portuguese governor in India. पूछ सकता है कुछ, मे बी स्टेट एग्जाम्स में पूछ सकता है, who was the first Portuguese governor in India? The answer is Francisco de Almeida. Francisco de Almeida was the first Portuguese governor in India. Okay. Second thing, what is his contribution? This is also an important point. Fort Saint Angelo, वे एक फोर्ट है कन्नूर में, केरला में, बट नो नीड टू रिमेंबर वेयर इट इज एंड ऑल, बट रिमेंबर द वर्ड फोर्ट सेंट एंजेलो वाज बिल्ट बाय हिम इन 1505. ये भी याद रखना, इट इज ए पोर्चुगीज फोर्ट. कभी कभी क्या होता है, लाइक कोलंबिया में 3-4 फोर्ट्स का नाम दिया, कोलंबिया में पोर्चुगीज, ब्रिटिश, डैनिश ऐसा दिया, आपको मैच करना है कौन सी फोर्ट किसका है. सो फोर्ट सेंट एंजेलो बिलोंग्स टू पोर्चुगीज एंड इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ Almeida. And one more thing is, he introduced blue water policy, monopoly over sea trade. So at that time Portuguese का monopoly था. So who was connected to blue water policy? Francisco de Almeida. So what we have to remember for Francisco de Almeida, first thing, he was the first Portuguese governor in India. Second, Fort Saint Angelo was built by him in 1505 at Kannur. Third, he introduced blue water policy. See, don't think what is blue water policy, what are the terms and conditions. We are not going anything deep into that. Okay. Next, one more person we have to remember here. The name of this person is Alfonso-de-Albuquerque. Alfonso-de-Albuquerque कौन है? He was the second Portuguese governor in India. Alfonso-de-Albuquerque was the second Portuguese governor in India. First Portuguese governor was Almeida. सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर इज अल्बकर्क. लेकिन हम क्यों याद रख रहे हैं? फर्स्ट को भी याद रखा, सेकंड को भी, इतना कितने गवर्नर्स को याद रखेंगे? हम इसलिए याद रख रहे हैं इसको क्योंकि ही इज इनफैक्ट कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया. वे बहुत एग्जाम्स में पूछ सकता है, हु इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया? द आंसर इज अल्बकर्क. जब इनकी टाइम पे पोर्चुगीज की पावर बहुत एक्सटेंड हुआ, बहुत पावरफुल बन गया पोर्चुगीज, दैट्स व्हाई ही इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर. एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन मैं वैसा बता रहा हूं ये पैराग्राफ. ही वाज मोस्ट सक्सेसफुल पोर्चुगीज गवर्नर. ड्यूरिंग हिज गवर्नरशिप, पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर द एंटायर एशियन कोस्ट फ्रॉम ऑर्मुज इन पर्शिया. मैं मैप में दिखाऊंगा ऑर्मुज कहां पे है. ऑर्मुज इन पर्शियन गल्फ टू मलाक्का इन मलाया एंड स्पाइस आइलैंड्स इन इंडोनेशिया. Vast, almost the whole Asia was under the control of Portuguese, and they had monopoly for almost 100 years. So
दैट्स व्हाई इनकी टाइम पे बहुत एक्सटेंड हुआ, तो ही इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, Alfonso de Albuquerque. And one more contribution is very important. He captured Goa in 1510. See, Goa, Pondicherry, present Puducherry, and Kochi, these are very important cities. इसका हिस्ट्री आपको बता होना चाहिए क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते हैं. बेसिक हिस्ट्री लाइक गोवा पहले बीजापुर के कंट्रोल में है. बामनी किंगडम आएगा एक टॉपिक मिडिवल हिस्ट्री में, वहां हम बात करेंगे बीजापुर के बारे में. सो देन 1510 में पोर्चुगीज हैज कैप्चर्ड इट. एट दैट टाइम गवर्नर वाज अल्बुकर्क. बस इतना बता होना चाहिए आपको. सो ही कैप्चर्ड गोवा इन 1510 by defeating the king of Bijapur and established their base in Goa. That's why even if you see after independence of India also Goa Portuguese के control में है. Then it was taken, right? So Goa was captured in 1510. Not very important for exam point of view, but for safe side I would like to give you some other forts. Fort Saint Angelo is very important. ये बार बार पूछ सकता है. But other important forts we remember Saint Thomas Fort. Saint Thomas Fort at Kollam also belong to Portuguese. Similarly, Bombay Castle is an island. Bombay it also belong to Portuguese. Saint Thomas Fort and Bombay Castle. Just mind में रख लेना. Otherwise not very important. So some other forts. Some other factories include at Dayu, Daman, etc. Not only Goa, even Dayu, Daman. That's why Dayu, Daman was also under the control of Portuguese till the end, along with Goa. Just mind me rakh lena. So what we have seen: Almeida, first governor, blue water policy, Fort Saint Angelo. Albuquerque, second governor, real founder of Portuguese power in India, and Goa, captured Goa in 1510. Then other forts are Fort Thomas and Bombay Castle, and other factories are Dayu, Daman, etc. Now we understand how Portuguese had come to Bengal. See, most of their settlements were on the western coast, Arabian Sea, Goa, Dayu, Daman, and Kerala. So now in Bengal, not very important this point, I am just saying, in 1536, Portuguese got permission from Sultan Muhammad Shah to trade in Hooghly. इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है. सो हुगली में ट्रेड करने का परमिशन मिली है उनको 1536 में सुल्तान मोहम्मद शाह से. फिर 1579-80 में अकबर ने उनको परमिशन दिया. किसको? कैप्टन, पोर्चुगीज कैप्टन, उनका नाम याद रख लेना, एक छोटी एग्जाम्स में अगर पूछेगा तो, पेड्रो टावर्स. सो अकबर हु गेव परमिशन इन 16th century to construct any city anywhere in Bengal to Portuguese? The answer is Akbar. किसको दिया? Captain Pedro Tavares. So to establish a city anywhere in Bengal province. Then what happened? They chose the Hooghly as their choice. This is important. So that's why Hooghly became the first European, not only Portuguese, European, because there is no other European country till now. So अगर कहीं पूछे द फर्स्ट यूरोपियन सेटलमेंट इन बंगाल, द आंसर इज हुगली. सो अदरवाइज थोड़ा पास्ट बैकग्राउंड देखेंगे तो 1536 में सुल्तान मोहम्मद शाह ने ट्रेड करने का हुगली में परमिशन दिया. फिर अकबर ने 79-80 में पेड्रो टावर्स को कहीं भी एक सिटी एस्टेब्लिश करने का बंगाल में परमिशन दिया. देन दे चूज हुगली. सो हुगली वाज द फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ यूरोपियंस इन बंगाल. ये वर्ड याद रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट. So I am just telling you, not important. So the Portuguese dominated the entire Asian coast from Ormuz. Ormuz, I told you, if you see in this map, you can find it here. This is Ormuz. So they dominated the entire Asian coast from Ormuz to Spice Islands in Indonesia. So Indonesia तक ये सारे उनकी कंट्रोल में था. So Portuguese, it was a monopoly. Almost for 100 years there was monopoly, because 1498 1500 से लेके 1600 तक nobody was there. So Portugal has enjoyed this monopoly, and which is very highly profitable trade. Getting me?
Not very important, just I am saying. So they combined the use of force with trade. They even use it to do force. How? They have followed a system called Fetores system. Fetores means trading post. They use it to construct a kind of trading post near a coastal area, like in the picture you can see, and they only can, it's like a storehouse, you can say. So Fittorious system, just word yaad rakh lena, otherwise not very important, not at all required for exam point of view. So Fittorious are fortified trading posts settled in coastal areas, built to centralize and thus dominate the local trade of products with the Portuguese kingdom. Don't worry about it. And now we understand what they have contributed, what they have introduced in India. You can see in the picture tobacco, cashew nut, pineapple, and chilies. These were introduced by Portuguese in India. Chilies are popular. India food means spicy food, but the chilies were introduced by Portuguese. Okay, tobacco, cashew nut, pineapple, and chilies were introduced by Portuguese in India. So this is all about Portuguese. Now we see what all we have seen in Portuguese. We can just revise in 1 minute. So first we have understood Columbus discovered America in 1492. Then we have seen Vasco da Gama, first European to reach India by all completely sea route in 1498, reached Calicut, met Jamorin, 60 times profit कमाया. Then एक fleet भेजा, उसका commander in chief है Pedro Alvares Cabral. वे क्या किया, पहले ब्राजील पहुंच गया. Then we have understood the early factories. First factory in India was at Cochin. Other early factories include Kollam and Kannur. Then we have seen the first governor, Francisco de Almeida, what he has done, Fort Saint Angelo and blue water policy. Then we have understood the second Portuguese governor, Alfonso-de-Albuquerque. ये क्या किया, real founder of Portuguese power, captured Goa in 1510. Then what we have seen, other important forts we have seen, St. Thomas and Bombay Castle. Then we have understood in Bengal the first settlement was Hooghly, not only for Portuguese, for the Europeans. Then finally we have understood that they had monopoly for 100 years from Ormuz to Spice Islands, and they have dominated the trade using Fittorious system, and they have introduced tobacco, cashew nut, pineapple and chilies. So this is all, that's it. Very simple. Now the second part, we will go to the Dutch. So that is all about Portuguese. Now the Dutch. Not required, just वैसा बता रहा हूँ. So United East India Company or simply the Dutch East India Company was established in 1602. They also have understood 100 years Portugal has monopoly. Now Dutch also has come into picture. They also has established their own company, Dutch East India Company, in 1602. No need to mug up the year, but chronology you just remember. Now we understand where they have established their first factory. Like Portuguese established their first factory at Cochin. Similarly, the Dutch established their first factory in Machilipatnam. Machilipatnam is in Andhra Pradesh. They established their first factory here. They did not come to India directly. First they went to Java and Indonesia side, and wahan se ve aaya. So they landed on the eastern coast. So remember, their first factory was at Machilipatnam. And one more we remember, then they established another factory at Pulicat, where Andhra and Tamil Nadu ka border mein hai. Pulicat Lake and all we will see. So Pulicat in 1610, then Surat, Bhimli again in Andhra Pradesh, Kasim Bazar and Chinsura are in Bengal. No need to remember all, just understand Machilipatnam and Pulicat mind mein rakh lena. So first factory was in Machilipatnam and then Pulicat. Then Surat, Bhimli, Kasim Bazar, Chinsura. Right? Next point is, when Dutch came here, Portuguese was already there. Not only here, everywhere, the whole Asia and all. So obviously there will be conflict between them. So don't mug up this point, just वैसा बता रहा हूँ. Beginning in 1602, जब से Dutch East India Company start हुआ, तब से Dutch companies invading Portuguese colonies in the Americas, Africa, India and everywhere. तभी तो है ना, वे तभी तो आ पाएगा. So that's why their work is only always they use it to fight each other.
हमको एक इससे कोई कुछ लेना देना नहीं है. सो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में 1661 में डच कैप्चर्ड कोलम. कोलम वाज अंडर कंट्रोल ऑफ पोर्चुगीज बट डच कैप्चर्ड इट इन 1661. Similarly, in 1663, Dutch captured Kochi. Cochin, one and the same. Kochi is the present name. So, Dutch captured Cochin also. Cochin was their first factory of Portuguese. So, 1663, it was captured and built there Fort Williams. इसमें दो important points हैं. Exam में अगर suppose if a question is asked, Kochi was always till India independence Kochi was under the control of Portuguese. ऐसा statement आएगा तो गलत है क्योंकि it was not under the control of Portuguese. बीच में 1663 में Dutch has captured it from Portuguese. Second is that Dutch का factory क्या है, Dutch का fort का नाम क्या है, Fort Williams. कहाँ पे है, कोच्चि में. So what to remember is 1661 Dutch captured Kollam. It is also not very important. But in 1663 Dutch captured Kochi from Portuguese and built there Fort Williams. This is important. Getting me? So 1661 Kollam, 1663 Kochi and built there Fort Williams. ये याद रखना. So Dutch was all taking Portuguese powers. Portuguese का power कम होती जा रहा है, Dutch बढ़ रहा है. लेकिन डच ने एक गलती किया. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. दिस इज बैटल ऑफ कोलाचल. एक ट्रावेनकोर किंगडम है इन द पार्ट ऑफ केरला. द किंग नेम वाज मार्तांड वर्मा. आई जस्ट रीड, डोंट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दिस पैराग्राफ. द यंग रूलर ऑफ ट्रावेनकोर मार्तांड वर्मा started to expand his kingdom. So the Travancore Dutch War that followed culminated in the Battle of Colachel, which proved disastrous for the Dutch. So एक बैटल हुआ, ये सब आप भूल जाइए, सिर्फ इतना समझ लीजिए. बैटल ऑफ कोलाचल वाज फॉट बिटवीन whom. अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आंसर है ट्रावेनकोर किंगडम एंड डच. ट्रावेनकोर एंड डच के बीच में वॉर है. ट्रावेनकोर का किंग है मार्तांड वर्मा, कोई मगब करने की जरूरत नहीं नाम. सो उनकी और डच के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बट डच ने इसमें बैडली हार गया. सो डच गॉट डिफीटेड. गेटिंग मी? सो दैट्स व्हाई इट बिकेम डिजास्टर्स फॉर द डच. So the Battle of Colachel was fought on in 1741. No need to remember the year or date. The Dutch never recovered from the defeat and no longer posed a large colonial threat to India. Are you getting what I mean? So it is all not required. This is not a very famous battle so that we remember the date and all. We don't require. Just remember Battle of Colachel was fought between Travancore and the Dutch and Dutch उसमें हार गया और उसके बाद वे रिकवर नहीं कर पाया. Got it? They fought another battle, that is the Battle of Bedara. Bedara is a small place near Chinsura in Bengal. That's why we can also call Battle of Chinsura. Just a name याद रखना. इसमें क्या है? One question could be who Battle of Bedara was fought between whom. So it was fought between the Dutch and the British. So Battle of Bedara, also known as Battle of Chinsura, 1759 में हुआ, but no need to mug up on all this, was fought between the British army and the Dutch army. So इसमें भी डच हार गया. उसके बाद डच का कंट्रोल बिल्कुल कम हो गया. ऑलरेडी ट्रावनकोर में इट वाज एक ऑलरेडी हार चुके हैं एंड अगेन बैटल ऑफ बेदारा में भी हार गया. नाउ डच वाज आउट ऑफ इंडिया. So this is all about Dutch. No need to know much about it. Got it? So Dutch settlements in India were surrendered to British. Now all these Dutch settlements like Kochi and all, वे सारे British का settlements हो गया अभी. So Dutch settlements in India were surrendered to British and Dutch was confined to Indonesia. Got it? So this is all about Dutch. Now you see, whatever we have seen, we can just see in 30 seconds. Dutch, what we started with, it was started in Dutch East India Company was started in 1602. Then first factory they established in Machilipatnam. Then Pulicat, Surat, Bhimli, Kasim Bazar, Chinsura, etc. Then they started fighting with this. But 1661,
they occupied Kollam, and 1663 they occupied Kochi from Portuguese and वहाँ build किया Fort Williams. आफ्टर दैट मार्तांड वर्मा के साथ जो बैटल ऑफ कोलाचल फाइट किया ट्रावेनकोर किंगडम के साथ, एंड दे लॉस्ट इट, एंड यू नो इट बिकेम डिजास्टर्स फॉर द डच, एंड फाइनली दे फॉट वन मोर वॉर, बैटल ऑफ बेदारा और बैटल ऑफ चिंसुरा विद द ब्रिटिश, अगेन दे लॉस्ट. सो ऑल दोज सेटलमेंट्स, ऑल देयर सेटलमेंट्स वर given to British and they were confined to Indonesia. That's it. This is all about Dutch. Okay. After Dutch, we will go to the British. British East India Company, or simply we call East India Company, which got royal charter from the Queen Elizabeth in 1600. That means you see, Dutch East India Company was established in 1602. It was in 1600 only. It was before Dutch. But when it was established is not important for us. When they have come to India is important. So Dutch कब आया था इंडिया में? 1605. You remember Machilipatnam in 1605. That's why I gave the year also. But when we talk of this, we'll understand. See, this point I am giving only for simple exams like state exams. The East India Company's first voyage ship was named as Red Dragon. वे कभी छोटी मोटी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, what is the name of the first voyage ship of East India Company? That name is Red Dragon. And who was the commander of this? That is James Lancaster. So just दोनों नेम याद रखना. यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा, but other exams के लिए first voyage ship of East India Company was Red Dragon and commander was James Lancaster. Got it? James Lancaster, Red Dragon. ऐसा नहीं वे डायरेक्टली इंडिया आ गया, पहले दे सेंट सम रिप्रेजेंटेटिव. दैट्स व्हाई दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन 1608 विलियम हॉकिंस, ये नेम याद रखना, विलियम हॉकिंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर. दोनों इंपॉर्टेंट है. हु विजिटेड इज इंपॉर्टेंट, किसका कोर्ट में विजिट किया ये भी इंपॉर्टेंट. सो विलियम हॉकिंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ जहांगीर टू सीक परमिशन टू स्टार्ट ए फैक्ट्री एट सूरत. कौन आया था? विलियम हॉकिंस. कौन सी किसकी कोर्ट में आया था? जहांगीर का कोर्ट में. क्यों आया है? टू सीक परमिशन टू स्टार्ट ए फैक्ट्री एट सूरत. गेटिंग मी? So William Hawkins visited court of Jahangir for the permission at Surat in 1608. Again statement based questions में आ सकता है, he got the permission वगैरह चीजों पे. So he was received well. वे अच्छा रिसीव किया उनको, and even you know Jahangir liked him. They became very close friends immediately, and you know he gave him a title also, but he could not grant the permission. Though he gave it, he withdrawn it because of the pressure of the Portuguese. Because Portuguese ने बहुत settled है, तब तक उनका influence है इनका कोर्ट में भी. So because of the pressure of the Portuguese viceroy, the grant was withdrawn, and Jahangir gave him the title of English Khan. चलो ग्रांट तो नहीं दिया, कम से कम तो टाइटल देके खुशी करना है. सो दे जस्ट गेव हिम, ही गेव द टाइटल इंग्लिश खान, बट ही कुड नॉट गेट द परमिशन. दैट ग्रांट वाज विथड्रॉन. गेटिंग मी? सो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें. विलियम हॉकिंस 1608 कोर्ट ऑफ जहांगीर फॉर द परमिशन टू स्टार्ट ए फैक्ट्री एट सूरत. रिसीव्ड वेल एंड Jahangir gave him the title of English Khan, but the grant was withdrawn because of the pressure of the Portuguese viceroy. Got it? ब्रिटिश को लगा ये पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस है, पहले उनको हराना चाहिए. देन देयर वाज ए बैटल कॉल्ड बैटल ऑफ स्वैली. स्वैली इज ए प्लेस नियर सूरत. सो बैटल ऑफ स्वैली वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड द पोर्चुगीज. द ब्रिटिश वर्सेस द पोर्चुगीज. So that's why they fought this battle. They defeated the Portuguese and they built a factory at Surat in 1613. Very important. So Portuguese fleet at Swally was defeated by British under Captain Thomas Best. ये भी छोटी मोटी एग्जाम्स में पूछ सकता है. Who was the captain of British at the time of Battle of Swally? Answer is Thomas Best. So 1612 में थॉमस वेस्ट की कैप्टनसी में ब्रिटिश ने पोर्चुगीज को हराया एंड 1613 में सूरत में फैक्ट्री बनाया. सो द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया वाज एट सूरत. फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ पोर्चुगीज वाज एट कोचिन. फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ डच वाज एट मछलीपट्टनम. फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश वाज एट सूरत. ये बैटल ऑफ स्वैली के बाद. गॉट इट? विलियम हॉकिंस केम टू जहांगीर कोर्ट. ओके.
One more person has come. The name of this person is Sir Thomas Roe. Sir Thomas Roe visited again the Jahangir's court only. Again important. मे बी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ सकते हैं कौन पहले आया कौन बाद में आया, या ये भी पूछ सकते हैं वे कौन सी किसका कोर्ट में आया, वे भी जहांगीर कोर्ट में ही आया 1615 में. ये क्यों आया? पहले वाला आया था सूरत में फैक्ट्री बनाने का परमिशन लेने का, वे आया था और फैक्ट्रीज बनाने के लिए परमिशन लेने के लिए. सो सर थॉमस रो विजिटेड मुगल एम्परर्स जहांगीर कोर्ट इन 1615. The purpose of his visit was to seek permission to trade and open factories in different parts of the empire. Getting me? Simple. विलियम हॉकिंस आया 1608 में, बोला मैंने फैक्ट्री ओपन करना चाहता है हम सूरत में, बट ही कुड नॉट गिव द ग्रांट बिकॉज ऑफ द पोर्चुगीज प्रेशर. दो दिया था बट विथड्रॉ किया था, बट उनको टाइटल मिला इंग्लिश का, एंड but they fought battle of Swally and defeated Portuguese and had started factory at Surat in 1613. and उस टाइम का जो उसका कैप्टन है उस वॉर में बैटल ऑफ स्वैली में थॉमस बेस्ट. देन थॉमस रो आया अगेन जहांगीर कोर्ट में आया 1615 में आया. क्यों आया? और फैक्ट्रीज बनाने परमिशन लेने आया. गॉट इट? तब क्या आया और फैक्ट्रीज, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज देखते हैं. सबसे पहले फैक्ट्री कहां पे? सूरत में. एंड साउथ इंडिया में सबसे पहली फैक्ट्री कहां पे? मछलीपट्टनम में. सो एपी में मछलीपट्टनम, अगेन ईस्ट इंडिया कंपनी ओपन ए फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम. और बात करेंगे ईस्ट में सबसे पहले फैक्ट्री कहां पे? ओडिशा में, पिपली. इन ईस्टर्न मींस ओडिशा and Bengal. So in eastern India the English opened their first factory in Pipli in Odisha 1633. Got it? So 1613 first factory at Surat, 1616 south में first factory at Machilipatnam, 1633 east में first factory at Odisha Pipli. Then they established their first Fort St. George at Madras. So the first Fort St. George is the first fort constructed by British in India. It was built in 1644 in Madras. You remember Fort St. Angelo was Portuguese fort. Similarly Fort Thomas also Portuguese fort. Then Fort Williams was constructed by Dutch after capturing Kochi, and Fort St. George belonged to British in Madras. Getting me? ये याद रखना. Fort St. George British 1644 Madras. Now if we take Bengal, so इनका भी फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटर बंगाल में हुगली ही बना. In 1651, English got permission to trade in Hooghly in Bengal, and the Hooghly became one of the main centers of English company. Even first European settlement was in Hooghly, right? So Nawab of Bengal, Sujauddin grant company the right to trade after paying duty. Duty pay करो और trade करो, कोई दिक्कत नहीं. So Nawab of Bengal ने Sujauddin gave this. No need to mug up these names. Maybe rare cases में बहुत, otherwise don't worry about it. So Hooghly again इनका भी important center बना. यहाँ तक अगर हम देखें, you see British is like any other European power. Like in fact Dutch was more aggressive. वे सारे पोर्चुगीज का जो इन्वेड कर रहा था, पोर्चुगीज कॉलोनीज को, पोर्चुगीज सेटलमेंट्स को, लाइक कोच्चि कैप्चर कर रहा है एंड ऑल. ब्रिटिश कूल था, लेकिन यहां से ब्रिटिश का आगे बढ़ना शुरू किया और रेस्ट ऑल नीचे हो गया. एक ऐसा वहां अभी देखते हैं. इसी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन. इन 1661 पोर्चुगल वाज एट वॉर विद स्पेन. ये कोई काम का नहीं, वे वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे. सो वहां यूरोप में वे पोर्चुगल ये कॉलोनीज के रिलेटेड ही स्पेन से वॉर कर रहा है. वहां इनको पोर्चुगीज को इंग्लिश का, इंग्लैंड का सपोर्ट का जरूरत पड़ा. सो इन 1661 पोर्चुगल वाज एट वॉर विद स्पेन एंड नीडेड सपोर्ट फ्रॉम इंग्लैंड. सो सपोर्ट के लिए दिस लेड टू द मैरिज ऑफ प्रिंसेस, डोंट ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स, प्रिंसेस कैथरीन ऑफ पोर्चुगल टू चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड. सो पोर्चुगल का प्रिंसेस इंग्लैंड का प्रिंस के साथ शादी किया, इसमें एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस डील समझो. बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट. सो उसमें बॉम्बे, यू रिमेंबर बॉम्बे कैजल. सो बॉम्बे वाज गिवन एज डाउरी बाय द पोर्चुगीज टू इंग्लिश किंग. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सो which was given as dowry or who gave the dowry, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको. So Bombay was given as dowry by Portuguese to England. That is what is important, nothing else. किसका शादी हो रहा है, उनका नाम क्या है, हम कुछ लेना देना नहीं उसको, ठीक है. So सिर्फ ये हम समझेंगे, Bombay was given as dowry by Portuguese to English in 1661 with the marriage.
राइट। सो पोर्चुगीज का अगर देखें 1661 में ही ये इस वार में बहुत लूज किया पोर्चुगल, इसीलिए 1661 में डच मौका देख के कोल्लाम को कैप्चर किया एंड 1663 में इसी टाइम पे कोच्चि को भी कैप्चर किया एंड इसको डाउरी भी देना पड़ा। दैट्स व्हाई पोर्चुगीज का पावर बहुत डिक्लाइन हो गया एंड नाउ पोर्चुगीज वाज कन्फाइंड टू गोवा डायू डामन। सो पोर्चुगीज इज ओवर नाउ, कंप्लीटली ओवर। सो पोर्चुगीज वाज नाउ वहां से तब से लेके इंडिपेंडेंस एंड लेटर तक गोवा में और डायू डामन में इट वाज ओनली सेटल्ड इन दैट प्लेस। गॉट इट। नाउ इंग्लिश की थोड़ा और बात करेंगे तो स्टिल इट इज ओके। नाउ एक गलती हुआ इंग्लिश वाले से, दैट वाज चाइल्ड्स वार। ये क्या है? सर जॉन चाइल्ड, इट इज द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ बॉम्बे। गवर्नर मींस नॉट दैट गवर्नर जनरल एंड वाइसराय जो बाद में आएगा, इट वाज जस्ट ए डी फैक्टो गवर्नर, सर जॉन चाइल्ड। He underestimated the power of Aurangzeb and he started fighting with him. So the first governor general of British settlements in India, the name was Sir John Child. वे ने क्या किया? In 1689 ये वॉर ब्रोक आउट बिटवीन द इंग्लिश एंड द मुगल एम्परर औरंगजेब। जस्ट इतना याद रखना, चाइल्ड्स वार की टाइम पे औरंगजेब वाज द एम्परर ऑफ मुगल। बस ये बताना चाहिए। सर जॉन चाइल्ड वाज द नेम ऑफ द गवर्नर एंड इसमें कौन जीता ये बताना चाहिए। दे थॉट इसका पावर कम हो गया, बट still Aurangzeb was popular even that time also. Popular means powerful. So British lost. So in this war British were expelled by Aurangzeb. British हार गया। लेकिन उनके पास एक ऐसा स्किल है, ये हारने के बाद भी छोड़ते नहीं है। वे आके फिर माफी मांग के फिर सॉरी बोल के फिर कुछ कर देते हैं। सो चाइल्ड्स वार बिटवीन मुगल एम्परर औरंगजेब एंड ब्रिटिश का गवर्नर जॉन चाइल्ड। ब्रिटिश ने हार गया, लेकिन व्हाट दे हैव डन इन 1690 कंपनी सेंट एनवॉइस टू औरंगजेब टू प्लीड फॉर पार्डन। वे क्षमा मांगेगा, फिर कंपनी पेड ए लार्ज इंडिमिटी एंड प्रॉमिस्ड बेटर बिहेवियर इन फ्यूचर एंड सब्सिक्वेंटली रीएस्टैब्लिश्ड बॉम्बे एंड सेट अप ए न्यू बेस इन कलकत्ता। ये सारे आपको जरूरत नहीं, जस्ट इतना याद रखना, चाइल्ड वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुगल एम्परर औरंगजेब एंड ब्रिटिश हार गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपको, अदरवाइज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, meanwhile what they have done, they have purchased another fort Saint David। ये भी याद रखना, Fort Saint David belonged to British। So Fort Saint David was a British fort near Kadalur. Kadalur is a district, is a place near Pondicherry or Puducherry in Tamil Nadu. So Kadalur is in Tamil Nadu. So वहाँ near that place they have purchased a fort from Marathas. The name of this is Fort Saint David. So Fort Saint George they built in Madras and Fort Saint David they purchased from Marathas. Both are in Chennai, in Tamil Nadu, and both belong to British. Okay. Next what happened? In 1691 they got exempted to pay custom duty in Bengal by a royal firman issued by Aurangzeb. You remember Shujauddin granted them permission to trade in Bengal after paying duty. Now Aurangzeb has given them royal firman, without duty you can do trade. उसे अभी चाइल्ड वार हुआ तब इतना जल्दी में कितना दोबारा दोस्त बन गया और दोबारा कितना चांस ले लिया उनसे, कितना फायदा उठाया। सो दैट इज व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ। सो इन 1691 ईस्ट इंडिया कंपनी, रिमेंबर which Mughal emperor gave them royal firman to British to exemption of custom duty? The answer is Aurangzeb. Getting me? 1691 Aurangzeb, exemption of custom duty and in Bengal. Okay. Now next is in 1700 they built another fort called Fort Saint William. Don't get confused with Fort Williams. Fort Williams was Dutch company, Dutch fort in Kochi. Fort Saint William is British fort in Bengal. So Fort Saint William was built in 1700 by the British East India Company under the supervision of John Goldsborough. ये नो नीड टू रिमेंबर किसकी सुपरविजन है। सर चार्ल्स हायर स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन नियर द बैंक ऑफ द रिवर हुगली। ये नेम्स आपको कोई जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखना, फोर्ट सेंट विलियम बिलोंग टू ब्रिटिश इन बंगाल, फोर्ट सेंट जॉर्ज बिलोंग टू ब्रिटिश इन मद्रास, फोर्ट सेंट डेविड बिलोंग टू ब्रिटिश इन कडलूर इन तमिलनाडु, विच वाज परचेज्ड फ्रॉम मराठास। ओके,
So now you see British का progress आगे बढ़ रहा है. Now they are doing constructive work one by one. Others क्या हुआ, पोर्चुगल वे खुद खराब कर लिया बिकॉज ऑफ द वॉर विथ स्पेन एंड ऑल. डाउरी में कुछ गया, डच के हाथ में हार के सारे सेटल हो गया, ओनली कन्फाइन हो गया गोवा एंड डायू डामन में. सिमिलरली डच क्या किया, मार्तांड वर्मा से जो ट्रावेनकोर किंग से बैटल ऑफ कोलाचल में हार गया एंड बैटल ऑफ बेदारे में हार गया, वे भी कन्फाइन हो गया इंडोनेशिया के. सो आउट ऑफ इंडिया. नाउ ब्रिटिश दे आर डूइंग गुड जॉब. नाउ फोर्ट सेंट विलियम हो गया. देन next in 1717, again very important, East India Company had secured a valuable privilege under a royal firman by the Mughal Emperor Farooq Siyar. What is this? Which had granted the company the freedom to export and import their goods in Bengal without paying taxes. It was already there. And the right to issue passes for the movement of such goods. Even they can print दस्तक्स बोलते थे. Even they can print their own passes for the movement of such goods. तो वे और फायदा उठाएगा. कोई और मर्चेंट्स को भी ब्लैक में ये passes प्रिंट करके देगा. सो ये फारूक सियार ने दिया 1717 में. सो इट गेव एन अनड्यू एडवांटेज टू द ब्रिटिश एंड फैसिलिटेटेड देयर ट्रेड इन इंडिया. सो औरंगजेब ने दिया टैक्स मत पे करो. पहले सुजाउद्दीन ने दिया टैक्स पे करके ट्रेड करो. औरंगजेब ने बोला टैक्स भी माफी. अब ये बोला टैक्स भी माफी, आप ही पासेस भी प्रिंट करो. गेटिंग मी? इसलिए इसके वजह से जो नवाब का इनकम आना है बंगाल में, वे इनकम आ नहीं रहा था. दैट्स व्हाई बैटल ऑफ प्लासी एंड ऑल वॉर्स बैटल्स होते हैं, बाद में बात करेंगे उसके बारे में. सो अभी के लिए इतना याद रखना. 1717 फारूक सियार, रॉयल फरमान ऑफ नॉट ओनली without taxes, free tax, without paying taxes, and the right to issue passes, dastaks. So this is about British. Now you see what all we have done can be done in just 1 minute. So first, British East India Company was established in 1600. Now their first voyage ship name was Red Dragon and commander was James Lancaster. वे UPSC के लिए नहीं, मे भी छोटी एग्जाम्स के लिए काम का आएगा. Then 1608 William Hawkins came to Jahangir Court, got the title English Khan, and why he came to open factory at Surat. Then Battle of Swally हुआ पोर्चुगीज और ब्रिटिश के बीच में. पोर्चुगीज हार गया. Then ब्रिटिश ने अपना पहले फैक्ट्री सूरत में 1613 में बनाया. Then सर थॉमस रो आया, अगेन जहांगीर कोर्ट में आया 1615 में. क्यों? टू गेट परमिशन टू ओपन मोर फैक्ट्रीज. Then what happened? 1616 में साउथ में मछलीपट्टनम में ओपन किया फैक्ट्री. 1633 पिपली ओडिशा में ओपन किया. इट वाज फर्स्ट इन ईस्ट इंडिया. एंड 1651 हुगली में. देन 1661 बॉम्बे डाउरी में मिला पोर्चुगीज से. देन 1689 चाइल्ड वार किया मैंने औरंगजेब के साथ, बट हार गया. देन माफी मांगा. देन 1690 में फोर्ट सेंट डेविड खरीदा मराठा से कडलूर में. देन 1691 में उनको औरंगजेब से रॉयल फरमान मिला एग्जम्प्टिंग फ्रॉम कस्टम ड्यूटी. देन फाइनली 1700 में फोर्ट विलियम्स बनाया कोलकाता में, एंड सॉरी फोर्ट सेंट विलियम्स. एंड फाइनली 1717 में रॉयल फरमान मिला फारूक सियार से. ये क्या है? राइट टू इश्यू पासेस आर दस्तक्स. दिस इज ऑल अबाउट ब्रिटिश. हार्डली 1 minute. गॉट इट? नेक्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट द डैनिश. इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वे किसी से लड़ा नहीं, कुछ किया नहीं. वे आया चुपचाप अपना काम किया और चले गया. का मतलब वे इतना इंपॉर्टेंट है. लेकिन इसमें क्या है, वे 2 बार आया है. तो लेट्स सी वन बाय वन. This is very small part. First point to know is the first Danish East India Company. Why I am calling first? Because they came 2 times. That's why we call first Danish East India Company, then second Danish East India Company. So the first Danish East India Company was chartered in 1616 under King Christian IV. इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट फॉर द सेफ साइड छोटी मोटी एग्जाम्स के लिए ज्यादा से ज्यादा याद रखना है तो 1616 एंड क्रिश्चियन 4. सो उस टाइम पे किंग था क्रिश्चियन 4. ओके. सो द फर्स्ट डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज चार्टर्ड इन 1616 अंडर किंग क्रिश्चियन 4 एंड फोकस्ड ऑन ट्रेड विद इंडिया. ओके, क्लियर दिस पॉइंट? Hope you are not taking notes. I don't want you to take any running notes. It is not required. That's why I am telling. I will tell you how to remember all these things. Don't worry. Just give me some time.
You will understand everything. After watching 4-5 videos, आपको खुद पता चलेगा ये कितना आसान है. Second point is the first expedition, जो पहले बार आया शिप, उसकी जो मेन कैप्टन है एडमिरल वो जद्दे. एडमिरल का मतलब इट इज ए नेवल ऑफिसर, एक रैंक है पोर्चुगीज डैनिश का. सो वो जद्दे, ये नाम भी याद रख लेना फॉर स्मॉल एग्जाम्स. सो क्रिस्टियन 4 was the king, who was the naval officer, just like commander in chief and all we are discussing. It is also like that. So admiral wo jadde. So first they reached Sri Lanka. Okay, 2 साल लगा उसको पहुंचने में. Moreover, half of their crew were lost during this journey. So finally they reached Sri Lanka. Point, श्रीलंका में जब तक वे श्रीलंका आया तब तक पोर्चुगीज वहां है, पोर्चुगल. So they told that it is our place. So finally they came to a treaty. They concluded a treaty with the Kingdom of Kandy. Kingdom of Kandy means it was a kingdom in Sri Lanka, not at all important for you at this point of time. And they made a settlement at a place called Trikomali. This is only just for safe side याद रख लेना, otherwise कोई important है. This is that place, Trikomali. This is the place. So no need to remember anything. So first point, Christian 4 was the king. So then Admiral वो जद्दे, they came to Sri Lanka and finally एक conclude किया था एक treaty and they made a settlement at King Trikomali. Comes to Indian mainland, they have taken permission from the king of Tanjavur king रघुनाथ नायक. नो नीड टू रिमेंबर द नेम, जस्ट वैसा बता रहा हूं. सो तंजावुर का किंग है रघुनाथ नायक, उनसे परमिशन लिया एंड दे टेकन ए सिटी, स्मॉल टाउन कॉल्ड ट्रैंकबर. दैट टाइम पे ट्रैंकबर बोलता था. नाउ इट इज तरंगमबड़ी. इट इज इन तमिलनाडु. यू कैन सी इन द मैप, दिस इज द प्लेस. सो दे हैव टेकन दिस प्लेस तरंगमबड़ी और ट्रैंकबर. So they got permission to open their factory and settle here in India, Tamil Nadu. Who gave it? Tanjavur king Raghunath Nayak. Don't remember the name, not required. Tarangambadi, ज़्यादा से ज़्यादा याद कितना रखना? ट्रैंकबर और तरंगमबड़ी याद रखना, nothing else. So Christian 4 वो जद्दे, त्रिकोमली, तरंगमबड़ी और ट्रैंकबर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना. ये तरंगमबड़ी में they made one fort. सो ये फोर्ट का नाम है डेंसबर्ग, ये याद रखेंगे. सो इन ट्रैंकबर इज नथिंग बट तरंगमबड़ी. दे एस्टैब्लिश्ड फोर्ट डेंसबर्ग एंड इंस्टॉल्ड कैप्टन क्रैप एट द फर्स्ट गवर्नर ऑफ डैनिश इंडिया. सो फर्स्ट गवर्नर वाज क्रैप. सो फर्स्ट गवर्नर नेम क्रैप. फर्स्ट देयर फोर्ट वाज डेंसबर्ग. देयर सेटलमेंट वाज लाइक पोर्चुगीज सेटल्ड इन गोवा. सिमिलरली फ्रेंच विल सेटल इन पॉन्डिचेरी. आई विल एक्सप्लेन. एंड हियर इफ यू सी देम, so they settled in तरंगमबड़ी और ट्रैंकबर. उनका फोर्ट का नाम है डेंसबर्ग एंड किंग वाज क्रिस्टियन 4 एंड द एडमिरल हु केम इन द फर्स्ट वॉयेज वाज वो जद्दे. एंड लंका में लिया त्रिकोमली. दैट्स इट. दीज आर ऑल व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. And some other factories if you talk, they also have factory at Machilipatnam, Surat, Balasore in Odisha. Machilipatnam in AP, Surat in Gujarat, Balasore in Odisha. They also have, but no need to remember, not very important. So what happened? They done some business, but somehow because of financial issue, they had to shut down their company. So they did not get investors and all, something, we don't go deep into that. So they had to shut down all their operations except Tranquebar. So this is all about their first East India Company, first Danish East India Company. Now we will see the second Danish East India Company. So you understand the first one? So first one was almost shut down except Tranquebar. Then again second Danish East India Company came. A new Danish East India Company was formed in 1670 and several new commercial outposts were established, governed from Tranquebar. Not at all important, so don't worry about it. So again second time आया based on Tranquebar और नया factories और बनाया. उनमें से मैं 2-3 examples दूंगा, otherwise you need not require to remember them. So like Denmark's नगर, कोलकाता में, बंगाल में, Denmark's नगर, then Frederick's नगर,
अगेन बंगाल में। सिमिलरली निकोबार आइलैंड्स को भी वे अपना प्रॉपर्टी बनाया और उसको नाम दिया फेडरिक्स आइलैंड्स। डू नो नीड टू रिमेंबर, डेनमार्क्स नगर, फेडरिक्स नगर एंड फेडरिक्स आइलैंड्स. So like this they again have done some business or some trade, but again they declined because of some reason. I will explain that. Again not very important. So there were certain wars called Napoleonic wars. Napoleon was the king. Napoleonic wars ये सारे world history में देखेंगे, don't worry now. It was war between French versus British, you can say. So French के support किया Danish, so automatically they also have lost. So they lost the war and hence they had to shut down all them, and now even their settlements become British settlements in India. So don't go deep into this. Napoleonic wars word याद रखना ज़्यादा से ज़्यादा, इससे वे ruin हो गया and now Danish was out of India. Okay. If you see what all we have seen in Danish, it just take 30 seconds. First we have seen Christian IV, who was the king at the time of making the company. Then next thing to know is the Admiral Vovjade, and they reached Sri Lanka and Trikomali. Then in India they came with the Tanjavur king Raghunath Nayak, Trankbar or Tarangambadi, and they have constructed a Fort Dansburg and Captain Kraft, first governor. Then what happened? Other factories are Machilipatnam, Surat, Balasore, etc. But they have shut down later, and only Trankbar में रहा थोड़ा बहुत. Then again second Danish East India Company came and established new factories. Examples: Denmark's Nagar in Bengal, Fredericks Nagar in Bengal, and Fredericks Islands, nothing but Nicobar Islands. And finally Napoleonic wars के वजह से they lost everything and British took over all Danish factories in India. So this is about Danish. Got me? And the last one, the French. French East India Company was formed in 1664. सबसे last. You see सारे 1664 बहुत recent. So it was formed in 1664 and they reached Surat in 1668 and established their first factory in India. So first factory of Portuguese was at Cochin, first factory of Dutch was in Machilipatnam, and first factory of British was in Surat, first factory of Danish was in Tarangambadi or Trankbar, and first factory of French was also in Surat. Got me? Some other things. Now they got permission from Abdullah Qutub Shah, ये गोलकोंडा का 7th रूलर है. नो नीड टू, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ. अब्दुल्ला कुतुब शाह से वे परमिशन लिया था टू ओपन ए फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम. सो दे ओपन ए फैक्ट्री इन मछलीपट्टनम आल्सो. They got in 1673 they acquired Pondicherry. This is important. So they acquired Pondicherry from the, no need to remember कहाँ से acquire किया, otherwise from the Kiladar of Valikondapuram under the Sultan of Bijapur. Bijapur के सुल्तान के अंडर आते थे, but not very important. Just remember in 1673, year याद रखना, 1673 they acquired Pondicherry. At least for Kochi, Pondicherry and Goa, you remember the years. 1673 they acquired Pondicherry. Later they our acquired Chandranagar in Bengal, Yanam, Mahe, Karaikal. That's why Yanam, Mahe, Karaikal and Pondicherry, these are all under UT of Puducherry even today. So this is all about their early thing. Got it? So first factory at Surat, then Pondicherry in 1673, Machilipatnam also is there, then Chandranagar, Yanam, Mahe, Karaikal. This is all about French. Now what happened? A Pondicherry को बीच में Dutch captured it in 1693. एक बार Dutch was very aggressive in the beginning, so they captured it in 1693, but returned it with a treaty of Ryswick. Ryswick एक नाम है, सिटी का नाम है डच में. So एक treaty of Ryswick के साथ वापस कर दिया दोबारा. क्यों बता रहा हूं मैं ये बात? अगर कहीं लिखा होता है पौंडीचेरी के बारे में, पौंडीचेरी वाज ऑलवेज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच फ्रॉम 1673 टिल इंडिपेंडेंस, ऐसा कुछ दिया तो गलत है, बिकॉज बीच में डच कैप्चर्ड इट. इसलिए बता रहा हूं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए. सो डच कैप्चर्ड पौंडीचेरी और पुदुचेरी इन 1693 बट रिटर्न्ड इट विद द ट्रीटी ऑफ रिस्विक.
So why all the European powers were successful in South India, especially the reason for their success in South India was, one reason was South was not under the grip of Mughals. मुगल्स का ज़्यादा कंट्रोल नॉर्थ में है, सो साउथ में उनकी ग्रिप नहीं होने के कारण ये रीजन हो गया उनका ईजी हो गया. सेकंड रीजन वाज उसी टाइम पे जब वे आ रहा था, लाइक पोर्चुगीज आया, तब तक विजयनगर एम्पायर वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पावरफुल एम्पायर इन द साउथ, तो वे डिसइंटीग्रेट हो चुका है. सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर आल्सो हैज हेल्प्ड देम. एंड थर्ड इज these all small states वे आपसी में लड़ते थे, they were always at constant conflict with each other, so वे Europeans advantage लिया उससे. So all these regions have helped the European powers to easily enter into South India, right? And the last one, Dupleix versus Clive. डुप्लेक्स कौन है? एक फ्रेंच गवर्नर है. सो देन डुप्लेक्स को अपॉइंट किया मैंने फ्रेंच ने. आई जस्ट रीड आउट. डुप्लेक्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच इंडिया फ्रॉम 1742 to 1754. He is very ambitious person. That too he was very young when appointed. You see, young people, so much of energy there. When there is no guidance, what they do, they always become ambitious and want to do things at any cost. So his ambition was to acquire for French vast territories in India, and for this purpose he entered into relations with the native princes and initiated the policy of taking part in quarrels of Indian princes. वे local princes का अपना लड़ाई में भी वे इन्वॉल्व होना शुरू किया. ऑब्वियसली वे ब्रिटिश को अच्छा नहीं लगेगा, अगर फ्रेंच एडवांस कर रहा है तो ब्रिटिश का नुकसान हो जाएगा, तो ब्रिटिश ने क्लाइव को भेजा. So Dupleix ambition clashed with British interest in India. Then Robert Clive arrived in India in 1744, a British officer who dashed the hopes of Dupleix to create a French empire in India. So ये उसके against इसको भेजा. Are you getting me? So इस slide में कोई important नहीं है, just remember the names. Dupleix from French, Clive from British. इससे ज़्यादा कुछ expect नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे. This is important. Now what happened? They fought 3 Carnatic wars, or we can call Anglo-French wars. हर वार का क्या कॉज का रीजन क्या है, क्यों लड़े, रिजल्ट क्या है, उस वार का रिजल्ट क्या है, वे दोनों आपको पता होना चाहिए. इस पे क्वेश्चन आ सकता है. सो कर्नाटिक वार्स किस किस के बीच में हुआ? मेन अपोनेंट्स कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट? Now we will discuss one by one. The first Carnatic War, approximate time भी याद रखना, 1746 में शुरू हुआ फर्स्ट कर्नाटिक वार. इसका कॉज क्या है, क्यों हुआ, ये लड़ाई क्यों हुआ? The reason was the first Carnatic War was the result of Austrian succession war. एक if you see this Europe map, ये ऑस्ट्रिया है. एक्चुअली ऑस्ट्रिया वर्सेस प्रशिया का बीच में एक वॉर चल रहा है. ये क्यों चल रहा है वगैरह अभी नहीं डिस्कस करेंगे. वे एक्चुअली कौन किंग बनेगा उसके ऊपर चल रहा है. दैट्स व्हाई ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर. जस्ट रिमेंबर दिस फ्रेज, वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन वर्ल्ड हिस्ट्री. ऑस्ट्रियन सक्सेशन वॉर वे चल रहा था. वे वहां लड़ रहे थे यूरोप में, तो यहां वे भी लड़ पड़े. There is no reason for the Carnatic war here. So they just are fighting because of the result of the Austrian succession war. Are you getting what I mean? Just remember this. The reason for the first Carnatic war was Austrian succession war. What is this war? Why this war? We will understand it later in world history. Okay? So what happened? The result was French won this war. Means पहले French was strong. So British हार गया. So French जीत के मद्रास को भी, Madras was in control of British, right? Puducherry was in the control of French. So Madras को besiege किया. So French besieged Madras. But Austrian succession war एक end आया, then conclude हुआ, then एक treaty हुआ, Treaty of Aix-la-Chapelle. तो उस treaty के साथ, so this also came to an end. This war in India also came to an end. Okay, so Austrian succession war was concluded with the Treaty of Aix-la-Chapelle. एग्जाम में पूछ सकता है Treaty of Aix-la-Chapelle is related to which battle or which war? The answer is first Carnatic war or Austrian succession war. Are you getting what I mean? So remember Aix-la-Chapelle, Treaty of Aix-la-Chapelle. So then this war was end, came to an end.
नेक्स्ट सेकंड एंग्लो फ्रेंच वॉर और सेकंड कर्नाटिक वॉर, इसका काज डिफरेंट है। पहले वार लोकल रीजन नहीं है, बट इस वार का पूरा रीजन लोकल पॉलिटिक्स है। See, this is all we will cover in medieval history. Now don't worry about it. चंदा साहेब एक बंदा है, एक काउन वगैरह अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। He was under the captivity, in the captivity of Maratha. So Marathas उसको लेके गया। So when they released him, so there was a conflict between him and Anwaruddin. क्यों? ये दोनों नवाब बनना चाहता है कर्नाटक का। कर्नाटक का मतलब दिस इज ऑल आर्कट, ये सारे कर्नाटक एम्पायर है, मैसूर, सो अदरवाइज दिस इज निजाम, सो दिस इज ऑल कर्नाटक एक्चुअली, बट इसमें मेनली फॉर आर्कट दिस एरिया। सो कौन नवाब बनेगा, इसके बीच में उनकी क्लैश आया, चंदा साहेब और अनवरुद्दीन के बीच में। सिमिलरली ऐसा ही एक प्रॉब्लम आया टू बिकम द निजाम का, ये बनाने के लिए, निजाम के लिए, कौन बिटवीन मुजफ्फर जंग एंड नाजिर जंग। सो मुजफ्फर जंग एंड नाजिर जंग को भी सेम प्रॉब्लम आया। गेटिंग मी? इनमें से मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहब दे रिक्वेस्टेड द हेल्प ऑफ फ्रेंच। वे डुप्लेक्स के पास गया, सो ये डुप्लेक्स को हेल्प मांगा। कौन? मुजफ्फर जंग निजाम का ये नवाब बनना चाहता है। चंदा साहब वे आर्कट का नवाब बनना चाहता है। चंदा साहब के अगेंस्ट कौन है? अनवरुद्दीन। मुजफ्फर जंग का अगेंस्ट क्या है? नाजिर जंग। सो दैट्स व्हाई दे वांटेड द हेल्प। नाउ व्हाट हैपेंड, even this war took place between French and British without the permission of their mother countries. वे उनका मदर कंट्रीज को भी नहीं बताया, वे यहाँ लड़ पड़े। अगर कहीं स्टेटमेंट में आता है सेकंड कर्नाटिक वॉर टुक प्लेस बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश विदाउट द परमिशन ऑफ देयर मदर कंट्रीज, यस सही है। गेटिंग मी? सो व्हाट हैपेंड, इसमें दो बैटल्स मशहूर है, इंपॉर्टेंट है। एक है बैटल ऑफ अंबूर। अगर कहीं क्वेश्चन आता है बैटल ऑफ अंबूर इज रिलेटेड टू विच वॉर, इट इज ए पार्ट ऑफ सेकंड कर्नाटिक वॉर। इस बैटल ऑफ अंबूर में क्या हुआ? फ्रेंच जीत गया। सो द बैटल वाज इनिशिएटेड बाय मुजफ्फर जंग, डोंट मग अप, एंड सपोर्टेड बाय डुप्लेक्स एंड लेड बाय चंदा साहब। क्यों? बिकॉज इट इज टू गेट द नवाब, टू मेक चंदा साहब नवाब ऑफ आर्कट। सो चंदा साहब ने लेड किया, मुजफ्फर जंग ने इसको इनिशिएट किया और डुप्लेक्स ने इसको सपोर्ट किया। सो व्हाट हैपेंड अल्टीमेटली, अनवरुद्दीन को ओवरथ्रो करके कर्नाटक का नवाब किसने बना? वे बना चंदा साहब। तो इस वार में क्या हुआ? फ्रेंच फोर्सेस वर डिसिसिव इन गिविंग द एलीज विक्ट्री, दैट मींस फ्रेंच जीत गया। मोहम्मद अनवरुद्दीन वाज किल्ड इन द बैटल एंड चंदा साहब सीज्ड कंट्रोल ऑफ द कर्नाटक। तो यू अंडरस्टैंड बैटल ऑफ अंबूर। सो बैटल ऑफ अंबूर में फ्रेंच जीत गया, चंदा साहब नवाब बन गया, अनवरुद्दीन का डेथ हो गया। गेटिंग मी? सिमिलरली मुजफ्फर जंग निजाम बन गया हैदराबाद का। सो चंदा साहब यहां हो गया, मुजफ्फर जंग हैदराबाद का। लेकिन है ना, मुजफ्फर जंग के साथ एक टाइम बैड था, आपसी में कुछ दिक्कत आया। आपस का मतलब कर्नूल नवाब, कड़पा नवाब, वे सारे कड़पा कर्नूल प्लेसेस है अंडर निजाम्स दैट टाइम। तो उनके आपसी में लड़ाई हुआ। वे गुस्सा में कर्नूल नवाब, उनके हाथ में एक बाला था, जो उसको क्या बोलेंगे, एक दैट काइंड ऑफ व्हाट वी कॉल, लाइक जैसा त्रिशूल होता है, त्रिशूल में तीन चीज होता है, उसमें एक ही होता है, सो लाइक जावलिन। सो वे लेके उसके सिर पे मारा, वे उनकी डेथ हो गया, मुजफ्फर जंग का डेथ हो गया। देन डी बसे कौन है? फ्रेंच कमांडर उस टाइम का। वे इमीडिएटली सलावत जंग को निजाम बनाया हैदराबाद में। ये भी आप याद रखना, किसने बनाया? डी बसे। ये छोटी एग्जाम्स के लिए, किसको बनाया? सलावत जंग। क्यों बनाया? क्योंकि मुजफ्फर जंग का डेथ हो गया। कैसा हो गया? ही वाज किल्ड, ही जीत गया एक्चुअली, बट ही वाज किल्ड बाय हिज ओन पीपल। सो यू अंडरस्टैंड, बैटल ऑफ अंबूर के बाद क्या हुआ? फ्रेंच जीत गया, चंदा साहब को वहां नवाब बना दिया, यहां मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया, लेकिन मुजफ्फर जंग मर गया बिकॉज ऑफ बाय हिज ओन पीपल, ही वाज किल्ड। देन सलावत जंग को बनाया डी बसे ने। बसे कौन है? फ्रेंच कमांडर। देन ऑब्वियस है, जो इंग्लिश एंड फ्रेंच वर अगेंस्ट,
तो वे नाजिर जंग बचा, और जो अनवरुद्दीन का डेथ हो गया आर्कट में, उनका बेटा, उनका नाम है मोहम्मद अली वालाजा। सो वे दोनों ब्रिटिश इंग्लिश की तरफ गया। सो या द बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच कंपनीज वर कंपीटिंग फॉर मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड। इंग्लिश स्टार्टेड सपोर्टिंग मोहम्मद अली वालाजा सन ऑफ अनवरुद्दीन एंड नाजिर जंग। वे उल्टा हो गया। तो देन एक और इंपॉर्टेंट बैटल हुआ, दैट इज बैटल ऑफ आर्कट। इसमें क्या हुआ, नाउ इंग्लिश जीत गया। इसमें इंग्लिश जीत के अगेन चंदा साहेब को मार दिया एंड मोहम्मद अली को नवाब बना दिया। सो यहां से फ्रेंच का डाउनफॉल शुरू हो गया। सी डोंट गेट कंफ्यूज, सेकंड कर्नाटिक वार में कौन कौन था? फ्रेंच के साथ कौन था? चंदा साहेब एंड मुजफ्फर जंग। ब्रिटिश के साथ कौन था? अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली एंड नाजिर जंग। सो पहले बैटल ऑफ अंबूर में कौन जीता? फ्रेंच जीता। एंड बैटल ऑफ आर्कट में कौन जीता? ब्रिटिश जीता। दैट्स इट। आई विल जस्ट रिवाइज द सेकंड कर्नाटिक वार। वे किस किस के बीच में हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ चंदा साहेब जो आर्कट के लिए नवाब बनने के लिए फ्रेंच का सपोर्ट मांगा, तो अदर साइड अनवरुद्दीन था, लेकिन उनके डेथ होने के बाद मोहम्मद अली को इंग्लिश ने सपोर्ट किया। सिमिलरली मुजफ्फर जंग इधर आया नवाब निजाम के लिए एंड नाजिर जंग उधर था। गेटिंग मी? सो ये सारे हुआ। बैटल ऑफ अंबूर में फ्रेंच जीत गया, बैटल ऑफ आर्कट में ब्रिटिश जीत गया। तो उसके बाद क्या हुआ, फ्रेंच ने डुप्लिक्स को वापस बुलाया, मतलब दे डिड नॉट लाइक हिम। सो डुप्लिक्स वाज रिप्लेस्ड बाय काउंट डी लैली। नाउ द गवर्नर बिकम काउंट डी लैली। गेटिंग मी? नाउ थर्ड कर्नाटिक वार, इसका कॉज ये है, देयर वाज ए वॉर कॉल्ड 7 Years वॉर। ये क्या है, हम वर्ल्ड हिस्ट्री में डिटेल में बात करेंगे। अगेन यूरोपियन वॉर है, 7 Years वॉर। सो वहां दे आर फाइटिंग, देयर मदर कंट्रीज आर फाइटिंग, सो यहां वे भी फाइट करना शुरू किया। सो द आउटब्रेक ऑफ द 7 Years वॉर इज द रिजल्ट ऑफ थर्ड कर्नाटिक वॉर। ओके, फर्स्ट कर्नाटिक वार का द सक्सेशन, ऑस्ट्रियन सक्सेशन वार वाज द रीजन। सेकंड कर्नाटिक वार का लोकल पॉलिटिक्स आर द रीजन, दे फॉट विदाउट इन्फॉर्मिंग देयर मदर कंट्रीज। थर्ड कर्नाटिक वार का 7 Years वॉर इज द रीजन। इसमें एक इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ वैंडीवाश। बैटल ऑफ वैंडीवाश ये 1760 में हुआ। इस बैटल में फ्रेंच बिल्कुल हार गया। The French troops under Count de Lally captured Fort Saint David. The English defeated them at Vandivash in 1760. So ये उसको हराया, and from now onwards French was confined only to Pondicherry. So English captured and destroyed Pondicherry. Then there was a treaty called Treaty of Paris. You see, Treaty of Aix-la-Chapelle is related to first war. Treaty of Paris is related to this third war or 7 Years war. So when 7 Years war came to an end in Europe by Treaty of Paris, automatically third Carnatic war also came to an end, and French was given back the Pondicherry and restricted to that place only. Now फ्रेंच को बोला यू जस्ट डू ट्रेड, ये भी हम बताएंगे, का मतलब प्रोटेक्शन हम देंगे। सो फ्रेंच वर प्लेस्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिटिश, ओनली कन्फाइंड टू पौंडीचेरी फ्रॉम नाउ। सो फ्रेंच का पावर भी कम हो गया। सो ब्रिटिश बिकम द सोल पावरफुल। नाउ यू सी व्हाट ऑल वी हैव सीन इन फ्रेंच जस्ट इन 1 minute. First we have understood French East India Company was founded in 1664. Then their first factory was at Surat. Then they started in Machilipatnam. Abdullah Qutub Shah ने permission दिया. Then they acquired Pondicherry in 1673. Chandranagar, Yanam, Mahe, Karaikal, etc. Then Dupleix versus Clive आया। 3 Carnatic wars हुए। First Carnatic war, it is the region was the result of Austrian succession war. French जीत गया। Treaty of Aix-la-Chapelle is related to this Austrian succession war. देन सेकंड कर्नाटिक वार हुआ, ये बिना बता के किया उनका मदर कंट्रीज को। इसमें फ्रेंच के साथ चंदा साहेब मुजफ्फर जंग था, उधर मोहम्मद अली एंड नाजिर जंग ब्रिटिश के साथ था। पहले बैटल ऑफ अंबूर हुआ जिसमें फ्रेंच जीत गया। देन बैटल ऑफ आर्कट हुआ जिसमें ब्रिटिश जीत गया एंड डुप्लिक्स वाज रिप्लेस्ड बाय काउंट डी लैली। देन थर्ड कर्नाटिक वार आया,
द रीजन फॉर दिस वॉर वाज 7 years वॉर. इसमें बैटल ऑफ वांडी वॉस है जिसमें फ्रेंच हार गया. देन ब्रिटिश कैप्चर्ड एंड डिस्ट्रॉयड पौंडीचेरी एंड विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस द फ्रेंच इज confined only to Pondicherry. And you know why French has lost it? The reason for the defeat of the French is actually one reason was French was also powerful, but French को support नहीं मिला इस बार. French government interfere करने लगा बीच बीच में. And you know the Lally did not have power to do anything. Even उनकी जो naval उसके पास force ही नहीं भेजा फ्रेंच ने. So that's why the naval superiority खत्म हो गया and French government बहुत ज़्यादा interfere किया. इसके वजह से फ्रेंच का हार हुआ, ब्रिटिश जीत गया. Now you see, out of all European powers, British become more powerful. So this is the topic. Hope you understand. Very simple topic, very easy topic. Thank you very much.